Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. जोरदार तालियां हो जाए. I want all of you to please stand up for love. Thank you so much. Thank you so much. My God. And also, I would like to thank Punya and Jiveshu for this amazing stand-up act. हंसने से कहते हैं कैलोरीज कम होती हैं. थोड़े तो पतले हो गए आज आप. खुद नहीं हुए तो हमें तो कराई दिया है यहाँ पर. Okay, this was wonderful. And इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूँगी on stage the very gorgeous Bhumi Pednekar. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us. Good afternoon, everyone. Oh, good afternoon. I'm so overwhelmed. हंस के मेरा पेट दुख चुका है. मेरी आवाज जा चुकी है. नहीं, आप चाहती हैं बहुत जल्दी शाम हो जाए. देख लिया हमने. नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम 10 बार और ये वहाँ शाम हो जाए. Okay, you know what? I want to ask you सबसे पहले तो कि ये करते क्या है आप स्क्रीन पर? विकी डोनर में कुछ ज्यादा ही कर रहे थे. दम लगा के हईशा में करना नहीं चाहते थे. यहाँ पर कर पा नहीं रहे. यार देखो, विकी डोनर में इतना डोनेट कर दिया कि बचा ही नहीं कुछ यार. Okay, you tell me how was it different? Yeah, first time दम लगा के हईशा में you looked like a different person altogether, and this is like a new Bhumi. यार मुझे समझ नहीं आ रहा. दम लगा के हईशा में ना हमारा तब भी सीन सून हो गए थे. यहाँ पे मैं ऐसी होगी हूँ तब भी कुछ हो नहीं रहा. तो मुझे बहुत टेंशन हो गई है. इससे पता लगता है आप मोटापे वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. गलती लड़कों में ही होती है. Yes. But how are you guys feeling? Yeah, हमने यहीं पर already response देख लिया. Very overwhelmed. Yeah, I think I'm really proud of this film. Very proud of the trailer and the response that we've gotten right now because we've only seen this trailer. हमने सिर्फ अपने मोबाइल पर देखा है, अपने edit rooms में देखा है, आनंद सर ने दिखाया था जब पहली बार. But with so many people around and the kind of response we got, it's very overwhelming. Absolutely. I think it's going to rock. इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूँगी the director of the film on stage, please. R.S. Prasanna. Thank you so much for joining me on stage. मैं आपसे जानना चाहूँगी, usually directors कुछ तो inspiration भी लेकर आते हैं ना, तो आप जरूर inspired थे ना इस film के लिए. क्या personal inspiration है? Anand ji, you told her to ask this question, right? No? Oh, somebody else also knows about it? No, this is not inspired from real life. No, not No. that. I have a 4-year-old and another coming out right now Coming out right now. in August. Achha, but the movie is called Shubh Mangal Saavdhan, and trust me, you know, when I was coming here for this trailer launch, मैं in the wildest of my dreams imagine नहीं कर सकती थी कि ये movie actually कैसी होने वाली है. What a surprise! What have you got to say about this? जो छुपा के रखा था आपने. Anand ji told us. No, not it to do doesn't that. sound right. जो छुपा के रखा है. आनंद जी. Doesn't sound right. छुपा के रखने वाली बात है वैसे, है ना? No, cinema is all about surprise. So, Sure. yeah. So अच्छा. That was well said. और हमारे किरदार भी आपस में बहुत सरप्राइज हो जाते हैं फिल्म में. तो प्रसन्ना ने सोचा कि हम सबके लिए सरप्राइज रखेंगे, है ना? We wanted the trailer to do the talking. So, I think how it did you did. like the trailer? I loved it. I loved it. मेरी आवाज खराब हो रही है हंस करके चिल्ला करके वहाँ पर बैठ करके. I was really like screaming my heart out. With this मैं इस मूवी के जो लकी चार्म लकी डुओ हैं आनंद एल राय जी and कृषिका लूला जी को भी बुलाना चाहूँगी on stage. The very gorgeous कृषिका लूला, who's always bagged unconventional topics in movies like Tanu Weds Manu, Happy Bhag Jayegi, and also Anand El Rai, the head honcho behind movies like Ranjana, Tanu Weds Manu, and Happy Bhag Jayegi, just to name a few. Thank you so much for joining me on stage. आपसे आनंद जी सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, unconventional topic, this concept. How did you actually agree to this? क्या feel किया आपने? सबसे पहले तो प्रसन्ना ने झूठ बोला है. He sold it to me as a true story. Inspired by True events. Himself. So मैंने कहा then present it. इसके आंखों में आंसू थे तब. But I said now present it to people with laughters. So anyways, yeah. On a serious note,
मेरे लिए ज़रूरी इसलिए हो गया था इस तरफ जाने के लिए इज बिकॉज आई वांटेड नाउ दिस इज वेरी मिडिल क्लास वर्ल्ड इफ यू सी वेरी क्लोजली सो और हमारे साथ मैंने से हमारे साथ हम सब बहुत सारे लोग मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं तो वो जो कंजर्वेटिव वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा जुड़ गया था तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग छुपाते हैं एक दूसरे से और मिडिल क्लास कंजर्वेटिव है ये बहुत टाइम से चल रहा था एंड आई वांटेड टू डील इनटू समथिंग जो थोड़ा इस चीज़ को ओपन अप करे जो हम नहीं रहे हैं वैसे वी कैन टॉक हम आपस में हम थोड़े गहरे दोस्त हो गए हैं हमारे रिश्ते थोड़े और गहरे हो गए सो दिस फिल्म विल एक ऐसा वाला टॉपिक जहाँ आई कैन सी द एंटायर फैमिली कमिंग आउट एंड एंजॉइंग द फिल्म एंड इस टॉपिक को लेके भी हम लोग आपस में बात कर सकते हैं इट्स जस्ट अ रेफरेंस क्या बात है आई होप ये एक बिगिनिंग मार्क करे जो आप कह रहे हैं कि हम लोग को खुल करके बात करनी चाहिए वैसे करते तो सब है बताता कोई नहीं है कृषिका जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी शुभ मंगल सावधान इस फिल्म का नाम है जब ये मूवी बन रही थी तब शुभ क्या हुआ मंगल क्या हुआ किस चीज़ से सावधान हमें रहना चाहिए या आप रहे थे Good afternoon, everyone. Interesting. Shubh Mangal Saavdhan. I think everything about this film is Shubh and Mangal. And Saavdhan उन्हें रहना चाहिए जो 1 September ये पिक्चर नहीं देखेंगे. Coming to the film, I feel शादी is always Shubh and Mangal. जी. And it's marriage is I think a biggest event for everyone. So I think सावधान भी रहना ज़रूरी है. इस मूवी में तो वैसे शादी के पहले ही मंगल इन द जंगल हो रहा है ओके आप दोनों का ये जो मैंने कहा था आपको स्टेज पे बुलाते हुए इट्स लाइक अ लकी डुओ आप दोनों लकी चार्म के जैसे वर्क करते हैं फॉर मूवीज व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट दैट I'm very excited, like always, to work with these fantastic talent, and the earlier films and the upcoming films. We do believe in fantastic content and good marketing, so that's what we are doing, and as you see, so working with Prasanna coming on board was amazing. Because I've watched his earlier film, Kalyan. Yeah. KSS. Yeah, KSS. I think really found it very interesting and how he, the storytelling, the way he said, not knowing the language, but I was enjoying the film. So it was a pleasure working with Prasanna. Sorry. थैंक यू सो मच कृषिका जी ओके विद दिस आई नो बहुत सारे सवाल हैं जो कि सभी मीडिया मेंबर्स एंड ऑल द गेस्ट्स जो आए हुए यहाँ पर उनके दिल में है नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज जीवेशु और पुण्य को मैं रिक्वेस्ट करूंगी दैट यू गो एंड प्लीज पास ऑन द माइक्स टू दीज लवली पीपल हु आर देयर ऑडियंस में एंड अपना थोड़ा सा क्वर्क ऐड करते हुए लेट्स हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया ऑलराइट जस्ट रेज योर हैंड्स and be as controversial as possible. Controversial. Of course. Of course. Controversial है. Why not? कोई सवाल ही नहीं है. कोई सवाल है आपके पास? पूछो मैं जवाब. और as the trailer send it on. यहाँ पे कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा. पूछो मैं जवाब दूंगा. Okay, we have a question there, Pankaj. Can somebody pass on the mic there? Actually, can't. Hello. Hi. Yeah, that's right. Just starting. Mic with you? Yeah, mic is with us. Yes. I'm still wondering what's the reference with the bear in the poster. That's still not clear. वो तो I think you'll have to watch the film to know it. But I promise you, it's not a love triangle. If that's what you guys are thinking, it's definitely There is no not. bestiality involved also. Okay. I'm curious to know what about the censor issues? Did you face anything? Till now, till trailer, there is no problem. Okay. Rest, I really don't know. We have tried to keep it as clean. ये जहाँ तक subject allow करते हैं. जी. Thank you. Hello. Anand, Hi, sir. Ayushmann. In the center. Hi. Vicky Donor, Dam Like Aisha, and even this, so all three are unconventional films.
So as an actor, were you skeptical at any point before taking this up? Because the topics are not usually shown in Indian cinema. I think I'll be skeptical if I choose any conventional subject. I think I'm meant for unconventional films, and you have to carve your own niche out in the cinema industry. And I think these kind of films work for me in a way. Be it Vicky Donor, Dam Laga Ke, or Shubh Mangal Saavdhan. I think this is a very quirky subject. It's like antithesis of Vicky Donor, and this is the second time working with Eros after Vicky Donor. Yeah. And to take the point of Anil Rai about conservative, Indian middle class being conservative. So do you think films are a great medium to like open up to such issues which are like not... The best thing about cinema is that it mirrors the society. जो society में हो रहा होता है वो आपको आईना दिखाती है और यही आईना आपको नजर आएगा फिल्म के अंदर. अगर किसी का प्रॉब्लम होती है हम छुप छुप के बात करते हैं बाद में सबके सामने आ जाती है पर इसमें किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया गया है. ये फिल्म में एक मैसेज है कि मर्दानगी सिर्फ वो नहीं है और बाकी सारी चीज़ें हैं. मैनलीनेस इज नॉट जस्ट अबाउट getting it up, you know. It's about being chivalrous, being a nice person, having a nice character. मतलब उसके बावजूद भी अगर लड़की आपसे प्यार करती है, that's true love. Okay. And आनंद सर सवाल आपसे है. आशी है म्यूजिक इंडस्ट्री. Thank you. It feels good. I can सर connect सवाल with ये this है film. कि आपकी और जो क्रिस्का मैम की जोड़ी है बीइंग अ प्रोड्यूसर, अभी तक आपने जो फिल्में की है ऑलमोस्ट सभी हिट रही हैं. आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ. मेरा काम करने का तरीका खुद के लिए यही रहा है कि जहाँ मन लगे वहाँ काम करो, अपने इमोशन करेक्टली एक्सप्रेस कर पाएँ. तो वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. आयुष्मान, इस फिल्म में आप भूमि के साथ काम कर रहे हैं वापस. इस फिल्म में उठाना तो नहीं पड़ा इनको, भूमि को कुछ और उठाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के अंदर. Ayushman here. Yeah, hello ma'am, how are you? Fine, thank you. अच्छा, you said कि जो मतलब और चीजें भी होती है, जरूरी नहीं डेट करना और वो, but वो भी एक biological need है ना? Of course it's a biological need, but so of course sometimes... How is this film trying to clarify that? Sometimes the bond between two people is beyond that. It's just purely platonic. Really? Like this girl is... Really? She's like, really? Oh, ये कौन सी क्या बोल रही हो? आप पता नहीं मुझे, लेकिन होता है कई बार दो इंसानों के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन जो बियॉन्ड सेक्स होता है. You should not, yeah. But I think in this situation, Sugandha and Mudit, they're madly in love with each other. Like probably they are beyond, the relationship is beyond that. What about you, Bhumi? You seem to be not agreeing to him on screen. I'm sorry, with ma'am? what he said just now. No. I actually completely agree with him. See, on our screen. Film, On screen. Yeah. Yeah. Well, there's a lot that she does for him on screen as well. But you know, I'll tell you what. Our film is about, it celebrates the imperfections of a relationship. You know, no relationship is perfect. No romance is perfect. Usually on screen, we see happy images, everything is great. But you know, there's small things that matter, even though this is not a small thing. But our film speaks about a lot of those aspects, and it just speaks about true love and how you can win over the toughest battle if you're together. आनंद जी, मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट में. वन लाइनर तो आया होगा फिल्म का, ये आर्या लोक. हाय आयुष्मान, हाय भूमि. सवाल ये है कि वन लाइनर आया होगा, किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और आयुष्मान एंड भूमि आए प्रोजेक्ट के साथ, ज़रा ये जिक्र करें. लंबा प्रोसेस रहा थोड़ा. प्रसन्ना चेन्नई से हैं और जब ये कहानी वो मेरे पास लेके आए, सो द ओनली थिंग आई फेल्ट कि और ये भी इनमें भी बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है. सो मैंने इनको बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज तुम चेन्नई से हो, थोड़ा वक्त यहाँ बिताना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको दिल्ली देखनी पड़ेगी, आपको ऋषिकेश हरिद्वार जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जहाँ पे आप ये कहानी लेके जाना चाह रहे हैं. सो अ लॉन्ग प्रोसेस, कहानी पे काफ़ी टाइम तक काम चलता रहा. बट हाँ, इट्स अ वेरी हैप्पी टीम, हम लोग बहुत एंजॉय करके काम करते हैं. एंड बस उसके बाद इस फिल्म को पूरे 2 साल लग गए बाहर आने में. सो जी. आयुष्मान एंड भूमि एक दूसरे में क्या बदलाव देखते हैं इस फिल्म के साथ, और पिछली फिल्म भी आपने साथ में की? नहीं, वो तो देखो, हम दोनों का बदलाव फिजिकल है. इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है और मेरा some other transformation from personal to this film. But I think ये बदलाव as an actor, I think both of us have evolved as an actor.
as actors. So I think, yeah, that's the change that we have seen in her. I think we've also become great friends. On this film especially, we were friends while we were shooting for Dam Laga Ke as well, but on this film, like, we really helped each other professionally. Like, you know, we are just there for each other to एक दूसरे को बोलने के लिए नहीं यार बहुत ही खराब कर रहे हो, प्लीज ब्रो टेक इट इजी ना करो. प्रसन्ना कृषिका जी ऐसा देखा जाता है कभी थिएटर में लॉन्च होते हैं ट्रेलर के, कभी कहीं हुए स्टैंड अप कॉमेडी एंड इस तरीके से लॉन्च करने का किस तरीके से आइडिया था और किसने इनिशिएट किया, ज़रा बताएं. ये हम सबका आइडिया था क्योंकि ये यूनिक और फिल्म है. It's quirky, it's fun, so I think stand-up act was appropriate for this film. And rather than getting it regular, and we wanted to make all of you all laugh and have a great time and enjoy the trailer with a lot of laughter. Hi, Ayushmann Bhumi. Hi. Yeah. Okay. So my question, जैसे हमने टीजर में देखा, जैसे हमने टीजर में देखा कि आप दोनों को इंट्रोड्यूस किया है कि not so hot, not so cool. तो according to you, both of them, like बॉलीवुड में कौन not so hot and not so cool है? ऐसे कैसे कह सकते हो आप यार? हम ही हैं वैसे. आप दोनों सुगंधा और मुदित. हम ही आप हैं. दोनों को छोड़ के कोई ऐसा नहीं होता. आई थिंक ये नॉट सो हॉट नॉट सो कूल एक तरह का हमने ये कुछ किसी को टैगलाइन या किसी को स्टीरियोटाइप नहीं किया है. इज इज दैट दिस स्टोरी इज अबाउट नॉर्मल पीपल, रेगुलर पीपल, not the MTV generation or the cool generation of urban cities. It's a normal issue also in our country. If you talk to people, it is an issue. Erectile dysfunction is an issue. And they deal with it. Every couple probably they don't deal with it at all. कुछ couples होते हैं इसको ignore कर देते हैं. हमारे एडिटर ने हमें बताया कि यार इनको प्रॉब्लम थी किसी उनके फ्रेंड को, तो उनके माँ बाप ने बोला चलो यार आप ना कनाडा घूमने चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. यू हैव टू सी टू इट. आपको प्रॉब्लम को देखना है, डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना है, उसको सॉल्व करना है. देयर इज अ प्रोसेस टू इट. तो हमने उसके बारे में इस फिल्म में बात की है. Hi, Bhumi, hi. Hi. Ayushmann just spoke about unconventional, quirky subject. That is what he prefer. What about you? Are you consciously going for? I think so. I think I've been very lucky after my first film that I've been getting films that are very high on content, that are different, and that break some sort of a boundary and ideology. And I really hope that I keep getting scripts like that. And I think I naturally have an affinity towards films that are different. You know, as an audience, I enjoy watching those films. So I think I have a natural tendency to choose those films to be a part of as well. Hi, Anand ji. Hi, this is Ankita from Republic. My question to you is that you just said that it's a family movie, but we can see that, you know, certain double meaning words are being used in the trailer. So do you think it is a family movie and we can, you know, sit with children and we can see this kind of film? No, there will be a age group mark on this film, definitely. Family, when I say family, कुछ भी यहाँ पे double meaning के हिसाब से नहीं किया गया. If you see very carefully, it is not. It's been treated on. Yeah, we want to visually, make you laugh of course, वो थोड़ा समझ में. Go with someone else's family, no? But then. Screw it, like just पड़ोसी के बाबा को लेंगे just नहीं, ये कोशिश मेरी भी मतलब पूरी टीम की यही रही कि whenever at whatever scenes or even in the screenplay we were trying to put the scenes where we keep this conscious there कि ये हम family के साथ देख सकें. So when you will watch the film, you will realize that it has been taken care of. Thank you. Hi, Ayushmann and Bhumi. मेरा सवाल आपसे है कि ये जो फिल्म है साउथ फिल्म का रीमेक है, तो आप दोनों को कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी अपने किरदार के लिए, और आपने वो फिल्म कितनी बार देखी और क्या एक्चुअली मैंने KSS एक बार भी नहीं देखी है. मैंने भी नहीं देखी. और इनफैक्ट इवन प्रसन्ना नहीं चाहते थे कि हम फिल्म देखें because, you know, we had to approach it in a completely new way. We didn't want any sort of reference. And we have a great director, we have a great writer, we have Anand, so we have a beautiful team. So we were very well guided already into the movie. तो हमें वो फिल्म देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है KSS. But हाँ, Prasanna always says that, you know, this is not a remake of KSS. It's a rebirth because the story is completely different. The issue, the crux, the germ of the film is the same. Erectile dysfunction. Apart from that, the world is different. KSS is more urban. This is more middle class. So everything is different. आनंद जी, फिल्म का नाम KSS था, तो ये फिल्म का नाम SMS हो सकता था? है. SMS ही तो है. शुभ मंगल सावधान.
आनंद जी, आपकी Last two questions, फिल्मों के जो संवाद होते हैं वो काफी अलग होते हैं और याद भी रह जाते हैं, जैसे अभी इसमें बाल तोड़ एंड अली बाबा 40 चोर एंड ऑल, जरा उसका जिक्र करें, किस तरीके से उस पर काम किएगा और किसने किया इस बार? ये हितेश हैं हमारे राइटर जिन्होंने ये लिखा है, हितेश मान। पर ट्रस्ट मी, ये कोशिश मतलब हमारी टीम स्टार्टिंग फ्रॉम हिमांशु जिन्होंने आगे इससे पहले सारी फिल्में लिखी, हम लोगों ने कभी भी डायलॉग्स के लिए काम नहीं किया। इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कैरेक्टर्स वैसे चुन लेते हैं जिनके साथ एक ये ह्यूमर अटैच किया जा सके, और इट्स मोर ऑफ द स्क्रीन प्ले, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो। यू विल फाइंड अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म इन दिस। और हाँ, स्पेसिफिक ये नहीं कि हम लोग कि यार ये पंच लाइन आनी चाहिए, इस पर काम कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं, बट कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग बन रहे हैं हमसे कि ये वाला ह्यूमर वो ले पा रहे हैं। आनंद जी, प्रसन्ना நீங்கள் निंदा மலையாளி உண்டு, தமிழ் தெரியுமா? நான் தமிழ் தான். தமிழ் தானா? अच्छा, யாருன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் இருக்கறா? யாருன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இப்படி இருக்கறா? Okay, let them speak, please. யாருன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இப்படி இருக்கறா? She's asking if any of my friends had or are having this problem. No. हाँ, இல்ல யாரும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் இல்ல. இல்ல எங்கள் சொன்னாங்க இல்ல ரியல் ஸ்டோரி இருக்குது. அதான் நான் I'll explain. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. So just elaborate பண்ணுங்க. Sure. So the movie, what she was asking is, do I know of people? I'll tell you one thing, that after I made this movie in Tamil, right, and like Ayush said, that the germ of the idea is the same. The film and the screenplay and everything is different. But after I made this movie in Tamil, I got a lot of people writing back to me, and that's when I realized that yes, we have used the vehicle of comedy to reach out and to entertain people, but actually this is a serious problem, and the seriousness is not the problem. Like, we have treated it like Mudit has got a headache or he's got a leg which is fractured. It's at the end of the day a as physical, natural as normal. Yeah, it's at the end of the day a physical problem. That's it, right? But I have got letters, I mean on Facebook, on SMS, whatever, I mean WhatsApp, people telling me, sir, I watched your film and I was moved to tears because my marriage broke up because of this. You know, there are so many problems related to sex that we do not talk about, but the germ of this idea came, I'll tell you where. As soon as I got married, which was in 2009, and with a girl who I was dating for 4 years, and when I was getting married, just one day before the marriage, suddenly all my uncles, aunts, everybody who I respected and I used to hide from them whenever I used to talk jokes, suddenly they all started coming on to me and talking adult stuff. अच्छा, साउथ में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल. ये पूरे भारत में ऐसा होता है? Yeah, absolutely. India it's an Indian thing, Ayush. It's a wonderful country. They start talking about this, and I remember my uncle and aunt were talking about scent. Now you will have a lot of scented candles, and you'll buy this. Yeah, and we use candles. We use candles in Chennai because a lot of power cuts, but not for other reasons. Not for other reasons. So that was the germ of the idea that, yeah, in India we do talk about sex, and we have a lot of sex, but we do not. We have a lot of sex. But we do not talk about it. That's all. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਜੀ, give the mic to her. Thank you. That's it. That'll be the last question. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਉ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? I have 2 kids right now. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? I think ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Anand sir, over here, towards your right, over here, straight. Yeah. Sir, the Tamil version of the film got a US certificate. So are you expecting the same from this one as well? Yes, I'm expecting the same. Anand? Sorry, we can't take any more questions. Thank you so much. Let's have a quick photo op. Last. Okay, last questions. Go for it. Okay, last क्या वजह है question. कि आपकी फिल्मों के हीरो हीरोइंस अमूमन कहाँ हैं आप? यहाँ हाँ जी सर. चलिए, हाँ पूछ लीजिए सर. हाँ, क्या वजह है कि आपकी फिल्मों में अमूमन हीरो हीरोइन छोटे शहरों से ही होते हैं? पता नहीं, हो सकता है ये एक अलग सी है, क्योंकि मैं खुद मैं हूँ दिल्ली से, पर वो मिडिल क्लास समझ पा रहा हूँ, इसलिए छोटे शहर में इस वक्त जब मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ और ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ. सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा 70% देश छोटे शहरों में बसता है, तो इसलिए वहाँ की कहानियाँ ज़्यादा रिलेट हो पाती हैं.
पैसे तो बड़े शहरों से आते हैं ना। छोटे से बैंगलोर से हो। 30% जो भारत है वहाँ से पैसा आता है, लेकिन 70% जो देश है हमारा वो छोटे शहर में बसता है। Thank you so much for the question.